Hello students, this is the third video lecture of chapter 12 Exponents and Powers, class 8 Maths. So in the previous two video lectures we discussed about the concept regarding laws of exponents. We have seen almost 6 different laws regarding exponents, and on the basis of that 6 laws we tried to solve questions. Okay, there were a few questions based on more of them were regarding simplification, how you can simplify the given form of exponent, okay, by division, multiplication, addition, and many things we have already discussed. In this video lecture we would be starting with the another concept related to this topic, and which says that here if we talk about exponents and power, okay, so what do you think? The first was regarding laws of exponent. Here we are talking about representing the large numbers in exponential form. Okay, now if we talk about standard form and usual form, you have already been gone through this kind of concept where we would be discussing about the standard form, usual form. So this is the usual form. If you check this topic in your textbook, it starts with giving you different facts. Okay, and these facts carries a large represents the value in a large form of number. If you see this fact that distance from earth to sun is, so it provides you some value, and this value is very large. Okay, so this is the usual form. Now we have to understand how can we convert this usual form into standard form. Okay, so first it provides the data that there are very very large numbers and there are very very small numbers. If you see here, distance from earth to sun is 15060000000 meter. So while why there is a need to convert these usual form into standard form, so it makes easy for calculation, it makes easy for you to use this number again and again. Instead of writing these many number of times zeros, if you simply write, let us recall how we used to write in standard form, which you have already studied in your lower classes. Okay, so if you move towards left hand side, this is your left hand side. Okay, so if you move towards left hand side, what happens? If you want to put the decimal, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so you would be writing 1.5, okay, 0, 6, okay, into 10 raised to now you moved 11 times. Okay, you moved 11 times, so 10 raised to 11. So what do you think? The standard form written by me, is it correct or not? Let us check your concept of your previous classes. If you check this out, is the standard form I have written is correct or not? Check it out. Okay, so I guess you would be saying no, this is not correct. Okay, I have provided you enough time to recall. Since I moved 11 places ahead, either I would be writing I have moved 11 places ahead, but after point I have placed how many numbers? 3 numbers. Okay, so instead of writing raised to 11, okay, or if you want to write raised to 11, you have to write 1.5 into 10 raised to 11. But since there is number, so what you would be doing? You would be again, let me clear your concept. Okay, so you again start from right hand side and move towards left hand side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 150.6 into 10 raised to 9 is the standard form.
Okay, so you have to check and how you have to write in standard form or how you have to convert usual form into standard form. Okay, I think this makes sense. Okay, this is very easy. We'll check out the next fact. The fact is speed of light. Speed of light is this much meter per second. If I want to write this number, this usual form into standard form, again we would be starting from right hand side. Since we are moving towards left, the exponent or the power which I would be providing to base 10 is positive. So when I would be moving towards left, the power would be positive. Okay, let us check this out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, since you cannot write this, so you move one more further. 9. So you can write 0.3 into 10 raised to 9. Or simply we calculated till here was 8. Okay, so you can write simply 3 into 10 raised to 8 meter per second. It completely depends on you how you want to represent. Okay, you can represent either like this or either like this. Usually it is said to be, if you are asked what is the speed of light, usually it is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Clear? Okay. Now if you watch thickness of book, it is 20 mm. Do you find any difficulty writing this number or value again and again? No, it's absolutely normal. So there is no need to convert this into standard form, because this is not categorized as very large number, and also it is not categorized as very small number. You can simply write this as many times as you want without any difficulty. Okay, we moved on to next fact, which says average diameter of RBC. Are you able to recall what is RBC? So RBC is nothing but red blood cell. Okay, so if we talk about red blood cells, diameter, since red blood cell is spherical, okay, so if we want to calculate the size of cell, we would always be taking the diameter of that cell. Okay, if I talk about this, you see, is this number very large? No, this number is very small. See, 0.00005 times 0, 7 meter. So this is very small. Now, how can I represent this in exponential form or in standard form? So, you see, now you would be moving the point towards right. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, you would be writing 0.7 into 10 raised to 5 meter. Am I correct? Correct now? If you are saying yes, I would say no. Why? Because see, we have moved towards right hand side. If we are moving towards right hand side, I have to take the power negative. Okay? While moving towards left, I would be taking the power positive. While moving towards right, I would be taking the power negative. Okay, moving down to next. Thickness of human hair ranges from 0.005 centimeter to 0.01 centimeter. Do you find any difficulty in this? No. So this is a normal number. Moving down to next. Distance of moon from earth. If you observe this value, this is very large. Again, let us convert this into what? You let me know. Standard form or usual form? We are converting this into standard form. Okay? So you either remove these 3 zeros or you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now you write 3.8. Now you reduce these numbers 1, 2, 3, 4. You can either simply write like this 7 है तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा इसका आगे का नंबर क्या आ जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा, यानी ये जाएगा 7. क्योंकि ये 7 है तो ये हो जाएगा 5. ये 5 है, ये इवन नंबर है, एक नंबर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5.
3.85 इंटू, क्योंकि पॉइंट के बाद तुमने 2 नंबर तो लिख दिए, कितने बचे 1 2 3 4 5 6, 10⁶ मीटर। इस तरह से तुम स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और एल्स अगर तुम यहाँ ये सिर्फ 3 0 को निकालते, देन टू ऑल्सो द नंबर इज वेरी बिग, so instead of this you can do this. What did I show you is 3 8 4 4 6 7 और ये 3 0 थे। मैं पॉइंट को यहां से यहां तक ले आई, ठीक है, तो मैंने 3.8 तो लिखा, लेकिन अगर मुझे ये नंबर नहीं लिखना है, सो आई कैन मेक एन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये 7 है और मुझे अगर इसको नेग्लेक्ट करना है तो मैं ये 7, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7। ये 7 5 से बड़ा है तो इसके आगे नंबर एक ऐड करोगे, इसमें एक ऐड करोगे तो ये जाएगा 5, ठीक है। फिर से ये 5 है, ये इवन नंबर है, एक नंबर ऐड कर दो तो ये हो गया 5। नाउ यू कैन राइट 3.85 into 10⁶. This is approximately, okay. How you can write this is an approximation, okay. This much difficult level won't be asked, but just in case for your knowledge I have provided you this method. Apart from this, size of plant cell, see this number is very small, है ना। So you would be moving the point towards right hand side. So what would be the sign of the power? If I am moving the point towards right hand side, 1 2 3 4 5, okay. So you can write 1.275 into 10⁵, okay, meter. I am writing this plus, is it correct? As I have already discussed, while moving right hand side I would be assigning the sign to the power negative, okay. So this would be negative. So 1.275 into 10⁻⁻5 meter. So this can also be represented like this. Again, if you want to shorten the value, okay, what you can do, since here it is 5, so 5 है तो ये 7 है, ठीक है, 7 बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 1.3 into 10⁻⁻5. You can also write like this. It is approximately equal to this. Okay. Next, average radius of sun. Sun का radius इतना दिया. We start moving the point towards left hand side. तो हमें क्या मिलेगा positive. 1 2 3 4 5. So 6.95. See, you have already written 2. Okay, 2 तो लिख दिए, 5 लिए 2 लिख दिए, तो बचा कितना 3, 10⁻3 किलोमीटर। Is it correct? You check this out and you also check this out. देखो ये सब रिवीजन चल रहा है ना, जो नेगेटिव वाला है वो अभी आया, ये वाले तो तुमने पहले कर दिए हैं ना, ये वाले कंसेप्ट इज ऑलरेडी बीइंग क्लियर फॉर यू, है ना। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं, सो हाउ यू वुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस इज अ चैलेंज फॉर यू, ओके, दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. So you check it out. Is these two representation of the usual form are correct or not? So if you observe carefully, अगर मैं पॉइंट नहीं लगाती हूँ तो मैं बोलूंगी 695 into 10⁻3 क्योंकि पीछे 3 0 है. But in case if I am adding point, that means I have to calculate this number also. That means 1 2 3 4 5. So 10⁻5. Okay? Are you able to recall? है ना, इसमें भी इस तरह से तुम इधर गए 1 2 3 4 5 6 7 8, so you have to write 8. Okay, 10⁻8. You can also write like this. See, 3.84467 into 10⁻8 meter. You can also write like this. Easy? Okay.
Last, height of Mount Everest 8848 meter. Is it a very large number? Is it a very small number? So no need to convert it in standard form. So the conclusion is, if you take a very small number, so you are required to place, what the two things you have to remember is, you are required to move this decimal point towards right hand side. If you are moving decimal point towards right hand side, then the power would be having positive sign. Am I correct? If you are nodding your head, please be sure that while right hand side, the power would be negative. And if you are placing the decimal sign towards left hand side, okay, you are moving left hand side and then placing, like just in this case, so then the power would be having positive sign. So this is the concept कि भाई तुमने ये वाला नंबर लिया, इसमें तुम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो पावर होगा उस पर पॉजिटिव साइन होगी. बट अगर तुम राइट हैंड साइड जा रहे हो तो तुम्हारे पावर के साथ नेगेटिव साइन होगी. सो दिस वाज द कंसेप्ट. ओके, to talk about this, these are the few numbers given in your text book. Okay, for try these, है ना. तो देखो, अब इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, ये पॉइंट को मैं किस तरफ ले जा रही हूँ, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे मैं डेसिमल पॉइंट को लेके जा रही हूँ, मतलब क्या, मुझे पावर नेगेटिव डालना है. देखो 1 2 3 4 5 6 7, so 5.64 into 10 raised to minus 7. Easy. Moving down to next. इसमें भी राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, so 2.1 into 10 raised to, क्योंकि राइट हैंड साइड ले गए, साइन पावर का क्या होगा, नेगेटिव, so minus 6. यहाँ देखो, अब तुम लेके आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, so 1 2 3 4 5 6, so 21.6 into 10 to the power 6. You can also place this one more further, यानी तुम 2.16 into 10 to the power 7 भी लिख सकते हो. It is your wish. Okay. Next, here also 1 2 3 4 5 6 7, so 1.524 into 10 to the power 7. Okay, positive sign because you move towards left hand side. Okay, check. Moved on to next. This was one concept. Another concept says, we have to, if we have to compare very large numbers with very small number, so what we can do, we can simply divide. Suppose we have to compare the diameter of sun with diameter of earth, कि भाई diameter of earth इतना है तो sun का कितना है. That means we have to compare कि sun earth से कितना बड़ा है. How much times the diameter of sun is greater than that of the diameter of earth. So to understand this, we would be dividing these two. Okay, तो जैसे यहाँ पे दिया है 1.49, we would be dividing the diameter of sun to the diameter of earth. When I would be dividing 1.4 into 10 raised to minus 9 meter by 1.2756 into 10 raised to 7 meter. So ये मीटर से मीटर पहले कट कर दो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 raised to 9 है और यहाँ पे 10 raised to 7 है. क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ इन दोनों में से या किसी को 9 कर दूं या किसी को 7 कर दूं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या तो मेरे को एक कॉमन पावर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से अगर मैं 100 निकाल देती हूँ तो ये 10 raised to 7 हो जाएगा. देखो 1.4 into 100 into 10 raised to 7 सेम ही हुआ, डिवाइडेड बाय 1.2756 into 10 raised to 7. अब इसको भी मैं कट कर सकती हूँ, कॉमन कैंसिल. ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये क्या है 1.4 है, 14/10, हाँ, और into 100 है. तो अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 14 into 10 140. Are you getting? Okay, so see that equals to
140 डिवाइडेड बाय 1.2756। अब मैंने तुम्हें समझाया कि तुम इसको 1.3 लिख सकते हो, यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया, हाँ देखो, अगर तुम्हें 1.275 दिया है, ठीक है, तो तुम, क्योंकि ये 5 है तो ये 7 का 7 रहेगा, लेकिन ये 7 है ना, ये बड़ा है 5 से, तो इसके आगे वाला जो नंबर है वो +1 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इसी तरह ये 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, +1, यानी हो जाएगा 6। ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये +1 8। अब ये 8 बड़ा है, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, 3। तो मैं 140 डिवाइडेड बाय 1.3 ऐसा लिख सकती हूँ। आर यू गेटिंग? अच्छा, क्या मीटर या कुछ ऐसा लिखना है इसमें, तुम बताओ। ऐसा कुछ लिखना है मीटर या कुछ ऐसा? नहीं, क्योंकि हमने मीटर पहले ही कट कर दिया है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया 140 डिवाइड बाय 1.3। इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, यहाँ पे अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखो तो कुछ अप्रोक्सीमेशन दिया है। वो अप्रोक्सीमेशन कैसा दिया है कि मान लो तुम इसको मैनिपुलेट करते हो तो कैसे कर सकते हो कि 1.3 है, मैं इसको 13/10 भी लिख सकती हूँ। 13 डिवाइड बाय 10, यानी मैं कर रही हूँ 140 डिवाइड बाय 13/10। हाँ, अब मैं, यानी ये ऐसा कुछ होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, है ना? हाँ, अब देखो 140 डिवाइड बाय 1 इंटू 10/13 ऐसा लिख सकती हूँ, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1400/13। ठीक है, अब ये देखो 14 और 13 कितने पास पास हैं। अगर मैं 13 को 14 से डिवाइड करती हूँ तो 13 1 जा 13, ठीक है, 1 10 100 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 पॉइंट। तो ये देखो 14 डिवाइड बाय 13 इंटू 100, यानी अगर हम अप्रोक्सीमेशन देखें तो डायमीटर ऑफ सन इज 100 टाइम्स मोर देन डायमीटर ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेट देखना है, समझ आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन लगाना है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे साइज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और प्लांट सेल को कंपेयर करना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे। देखो इसको हम एक्सपोनेंट वाली पावर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो देखो 1 2 3 4 5, सो 0.7 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, सो 1.275 इंटू 10⁻⁻5। मीटर एक दूसरे से यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा, इससे बचा क्या, 0.7 बाय 1.275। ऑलमोस्ट तुम इसको 1/2 लिख सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये है 0.7 डिवाइड बाय, देखो इसको मैं 1.3 लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे भी बताया था, है ना? 1.3 लिखा, 13 इज आस पास है 14 के, है ना? और हमें पता है 14 7 का डबल है, तो मैं इसको देखो 0.7 1.3 दोनों में एक ही पॉइंट है, तो मैं 7/13 लिख सकती हूँ, एंड 7/13 इज नियरली 1/2, है ना? समझ आ रहा है? सो हाफ मीटर का देर इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड आरबीसी। आर यू गेटिंग? ओके, मूविंग डाउन टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिधर ये तुम्हारा सन है, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर मून। यू हैव बीन आस्क्ड that the distance between sun and earth is this much, 1.496 into 10⁻11 meter. Distance between moon and earth is provided to you.
Now your task is to find the distance between moon and sun. अरे मैम ये तो सिंपल है. क्या सिंपल है कि मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये डिस्टेंस पता है. टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा. तो बस क्या करना है, 1.496 इंटू 10⁻11 माइनस 3.84 इंटू 10⁸8. अगेन तुम देखो, तुम इनकी अगर पावर सेम कर दोगे तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते है ना. तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हम 1.496 इंटू 100, 2 जीरो निकालूंगी, 11 10 9 3 निकालूंगी, हुआ देखो 3 प्लस 8 हो जाएगा 11. तो मैंने 3 जीरो निकाले, अभी 8 बचे, माइनस 3.84 इंटू 10⁸8. ठीक है. अब अगर मैं इसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी ये 1.496 को मैं 1496 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रही हूँ, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल. ठीक है. तो 1496 माइनस 3.84 इंटू 10⁸8, ये क्या है, मीटर में. तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन तो इजी है. ठीक है. तो जो भी वैल्यू आए इंटू 10⁸8 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून. ठीक है. ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो. सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर, these are the two solved examples. This is solved example number 8. Okay, here you have been asked to convert these numbers again into standard form. Okay, so if you to convert this into exponential form or standard form, what you have to do is you have to place this point number towards right hand side. How many? 1 2 3 4 5 6. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, so 3.5 into 10⁻². See, you move towards which side? Right hand side. So power would be negative, -5. This is how you would be representing this usual form as standard form. If you observe this, again, now you are moving towards left hand side. So 1 2 3 4 5 6. So 4.05 into 10 to the power 6. Okay, because you have moved toward left hand side, the power would be positive. Okay, similarly as in case I have said you here, you can write like this. The early representation was also correct. Like, you started moving from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So you can write 1.506 into, since you move towards left hand side. Okay, so how many number? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 10⁻11 meter. So you can also represent this, okay, like this. Okay, clear with this? So this is how you can convert the usual forms, very large numbers or very small numbers, into standard form, that is exponential form. Okay, now we would be talking about conversion into usual form. You have been given standard form. Okay, so solved example 9 says you to convert this into usual form. Okay, so see here, 3.52 into 10 to the power 5. 5 means what? 10 to the power 5, यानी 5 जीरो है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. कैसे? तो देखो 3.52 को 352 डिवाइड बाय 100 कर दे. ओके, इनटू 10 टू द पावर 5, यानी 1 2 3 4 5. तो ये 0 से 2 0 कट. आंसर वुड बी 3521230. This is the usual form of this exponential form. Apart from this, okay, apart from this, you can also represent it as, suppose इसको नहीं, लेकिन देखो जैसे
ऐसा, ये एक मेथड ऐसा है, ठीक है। मान लो नंबर कुछ ऐसा तो 10 टू दी पावर 10, तो तुम 10 जीरो से यहाँ पे लगा के नहीं दिखाते, सिंपली हमने लॉस पढ़े हैं, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, तो क्या करोगे उस केस में, देखो 3.52 यानी 352 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू दी पावर 10, डिवाइड बाय 100 तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ 352 इंटू 10 टू दी पावर -2, जब ये 100 को ऊपर ले आती हूँ तो -2 इंटू 10 टू दी पावर 10। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी 352 इंटू 10 टू दी पावर -2 प्लस 10, so 352 इंटू 10 टू दी पावर 1 positive 1 negative, put the sign of bigger number, subtract the number, so 352 into 10 to the power 8, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, है ना, तो हम उसका एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं, so why to go with usual method instead of applying these loss of exponents, are you getting? Similarly जब यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 352 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर 5, ओके, सो 352 इंटू 10 टू दी पावर -2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 352 इंटू 10 टू दी पावर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, सबट्रैक्ट द नंबर, 5 - 2 3, सो 352 इंटू 10 टू दी पावर 3, वही हमारा आंसर आया था 352 1 2 3 3 0 सेम, ठीक है। क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रखना है, हम इसको यूजुअल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। चलो आगे देखो 7.54 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो 754 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो मैं 754 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -4 लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, ठीक है। सो 754 इंटू 10 टू दी पावर -2 -4, सो माइनस 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 4 प्लस 2 6, सो 754 इंटू 10 टू दी पावर -6, पर ये अभी भी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, है ना, ये अभी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हमारा क्या आया 754 इंटू 10 टू दी पावर -6, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 754 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, समझ आ रहा है, 6 आ गए। अब देखो इसमें भी इस तरह से देखो, ये तुमने लिखा 754, माइनस साइन तब आता है जब हम डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं, तो हम कितने जीरो डालेंगे 1 2 3 4 5 6.0, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चेक करो कि जब तुम इस पॉइंट को ले आओगे तो ये आंसर आता है कि नहीं, है ना, तो सिंपल है, ठीक है। फिर से जब तुम इसको यहाँ ले जाओगे 1 2 3 4, तो देखो 7.54 राइट हैंड साइड लेके गए तो -4, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स में चेक करके देखो कि ये वाला जो आया ये इस फॉर्म में वापस आता है या नहीं। जो तुमने यूजुअल फॉर्म बनाया उसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और you have to check whether it is matching or not. If it is matching, then this standard usual form is matching with the standard form. Okay, last solved example which says 3 into 10 to the power -5, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस है, डिवीजन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये खुद नंबर 0, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। So this was all regarding solved examples and understanding this concept. Now taking this concept into consideration, let us start with exercise.
So here are the exercise questions. First question says, you have been provided usual form. You have to convert simply into standard form. Since we are starting from this concept, we have done many questions like this. So this is the same one. Okay, so we have to convert these usual form into standard form. See here. If I am moving the decimal point towards right hand side, my power would be negative. Keeping that in mind, let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 8.5 into 10 to the power minus 12. Okay. Next. Again the same method. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 9.42, since we move towards right hand side, the power of base 10 would be negative, that is minus 12. Again, here we would be moving this time, since the number is very large. These two numbers were very small. So in very large number, we would be moving towards left hand side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 6.02 into 10 to the power 15. Since we move towards left hand side, the power would be positive. Okay, let us talk about this. We have to move this decimal point towards right hand side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 8.37 into 10 to the power minus 9. Okay. Next, since the number is very large, we would be placing the decimal point and moving it towards the left hand side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So 3.186 into 10 to the power 10. Why 10? Why not minus 10? Yes, the reason is obvious, that since we are moving towards left hand side, the power would be positive. Okay. Now here we have been, in the second question, we have been provided with standard form. We have to convert this standard form into usual form. Okay. So let us try this. This is the standard form being provided, 3.02 into 10 to the power minus 6. I can write this 3.02 as 302 divided by 100. ये 10 to the power 6 मल्टीप्लाई में जब मैं नीचे लेके आऊंगी तो प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 प्लस 2 8 है ना. तो मैंने लिखा 302, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.0. So this is the usual form. Okay, second, see, 4.5 can be written as 45 by 10 into 10 to the power 4. So 1, 2, 3, 4. एक 0 से एक 0 गया. So 45,000 is the usual form. Again, 3 into 10 to the power minus 8. जब मैं डिवीजन में डालूंगी ये प्लस 8 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो देखो ये 3 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पॉइंट लगाओ 8 के बाद और फिर 0. So this is the usual form. Similarly, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4. So 1, 0, 0, 0, 1 by 1, 2, 3, 4. Can I write this as this in fraction form? Into 10 to the power 9. तो अभी देखो इधर 9 लिखने के जगह you place this plus 9 below division, तो वो क्या आ जाएगा 10 to the power minus 9. ये 4 के जगह मैं 10 to the power 4 लिख दूं. मल्टीप्लीकेशन है, मैं दोनों को क्या करूंगी ऐड करूंगी, है ना. सो सी, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा -9, है ना. देखो 10⁻⁴ प्लस -9, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है
तो sign remain as it is. Now 1 positive 1 negative, put the sign of bigger number, subtract the number. तो 10 to the power -5 क्या ये 10001 by 10 to the power -5. जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो +5 हो जाएगा, यानी 10001 into 10 to the power 5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10001 5 बार 0 1 2 3 4 5. So this is the usual form. Okay, moving down to next. 5.8 into 10 to the power 12. So 5 या 58 divide by 10 into, अब देखो 12 लिखने की जगह फिर से क्या करेंगे, नीचे डाल दो, into 10 to the power -12. ये +1 है, तो अब क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, तो +1 प्लस -12, क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है तो मैं इसको डायरेक्टली -12 लिख सकती हूँ. ठीक है, अब ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, सब्ट्रैक्ट द नंबर. सो 58 बाय 10 to the power -11, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +11. सो 58 into 10 to the power 11. सो ये क्या हो जाएगा, 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दिस इज द यूजुअल फॉर्म. ओके, अब देखो यहाँ पे 3 6 1 4 9 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5. पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने नंबर नीचे डाल दो, 1 2 3 4 5 इनटू 10 to the power 6 1 2 3 4 5 6. अब ये 5 0 और ये 5 0 कट, बचा एक 10. सो 3 6 1 4 9 2 0. ठीक है, दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट्स दी थी, मैंने स्टेटमेंट्स को सिर्फ नंबर्स में कर दिया क्योंकि उनका मेन एम था टू कन्वर्ट दिस यूजुअल फॉर्म अगेन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें ये वाले नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पहली स्टेटमेंट बोलती है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ मीटर. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 by 10 to the power 6. जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 10 to the power -6 मीटर. ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है, ऐसा दिया है. तो इसमें देखो ये पॉइंट इधर है, मैं किधर ले जा रही हूँ, राइट हैंड साइड. पावर क्या होगा, नेगेटिव. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Okay, is the charge of one electron. We have represented the charge of one electron in the standard form. Now see, ये दिया है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया है. We have to just focus how can we convert this usual form into standard form. पॉइंट को हम किस तरफ ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड. दैट मीन्स द पावर वुड बी नेगेटिव. 1 2 3 4 5 6 लेना है एक और, चलो 7. सो 5.0 into 10 to the power -7 मीटर. or else you can write 0.5 into 10 to the power -6 meter. In whatever way you want you can represent, but we have to represent in standard form. Now see next, 1 2 3 4 5. 1.275 into 10 to the power -5 meter, because we moved the decimal point towards right hand side. Again here this 1 2, so 7.0 into 10 to the power -2 mm. Okay, now next is last question of this exercise. Says in a stack there are 5 books, each of thickness 20 mm, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. So what is the total thickness of the stack?
तो 5 बुक है, एक बुक का थिकनेस कितना दिया है 20 mm, तो 5 बुक्स का कितना होगा, अगेन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 multiplied by 20 divide by 1, 5 multiplied by 20 divide by 1, that is any number divided by 1 is the number itself. 5 2s are 10, 8 0 100 mm. So 100 mm is the thickness of 5 books. 100 mm is the total thickness of 5 books. Okay, now there are also in the stack there are 5 paper sheets. See, thickness of one paper sheet is 0.016 mm. Is 0.016 mm. Now we have to find the thickness of 5 paper sheets. Again we would be doing cross multiplication. We would be multiplying 5 with this number and divided by 1. So 5 into 0.016 by 1 mm. Okay, mm. So see, you have to simply multiply 16 by 5. 6 5s are 30, 5 1s are 5, 3 80. See, here 80 and 1 2 3. 1 2 3.0. So 0.080 mm is the total thickness of 5 paper sheets. Okay. Now we have to calculate the total thickness of stack. That means the total thickness of 5 books plus total thickness of paper sheets. So 100 mm. Okay. 0 0 0 plus 0.080. ठीक है, तो 0.001 is the mm. Okay, mm is the total thickness of the stack. Okay, so this was all about the exercise. Now lastly, which you are awaiting for a long time, that are the extra questions regarding these concepts. So as you can see, these are few extra questions. Okay, the basic concept behind this is to you should be able to know how you can convert standard form into usual form or usual form into standard form, and addition and subtraction with the this standard form, how you can do that. Okay, so as you can see, the third question is the same as given in textbook. While they were explaining the concept, they have also provided this kind of question. Okay, answer I have already provided. The method is in the textbook. In case if you feel any doubt regarding any of these questions or any exercise question of this chapter, you can ask me in the comment box. Okay, or else you can directly send me the mail on the link given in the description below. Okay, so the link for mail have already been provided. It's now your time to practice these questions, and in case if you encounter any difficulty, feel free to ask. So in that case, we finish this chapter, and soon we would be starting with new chapter.